आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको डाउट्स होगा कि हाउ इट इज गोइंग। Yeah, actually one of the device is coming. That's why I'm here. So I'm sharing one of the screen uh, window. This one. Okay. Let me know, guys, once you are able to see that screen. Can you see that? The US recording and everything. So this is the screen, and these are the things which we are going to cover in our training. आप लोगों ने बहुत सी बार इंक्वायरीज भी की होगी और डाउट्स भी होंगे कि व्हाट इट्स गोइंग हैपन, कि क्या क्या सिखाएंगे, कैसा रहेगा, हम आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज के रिलेवेंट एक्सपीरियंस हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो लेट मी टेल यू ऑन दिस training. You are going to learn bookkeeping, accounting, review, finalizing payroll, sales tax, 1099 and financial report, and supporting schedules also. This is candidate syllabus and practical reference manual. ये जो है हमारा सिलेबस है. ये जो है ये हमारा सिलेबस है कि जो हम कैंडिडेट के साथ शेयर करते हैं वंस दे एनरोल. और इसके अंदर कौन सी चीजें हैं. 30% ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड करेक्ट वर्क फ्लो. कौन सी इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है, उनका स्टाइल कैसा रहता है, ये एवरीथिंग वी आर गोइंग टू गो इनटू दैट. सो ऑन अ बेस ऑफ दैट आप समझ भी सकते हो कि कैसे कैसे वर्कआउट होता है. देन 20% ट्रांजेक्शन क्रेडिट एंड डेबिट एंड एडजस्टमेंट एक्यूरेसी, कि कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनकी एक्यूरेसी क्या है, डेबिट्स एंड क्रेडिट कैसे होते हैं, वो सारी चीजें समझाई जाती है. 20% पार्ट आता है रिकंसिलिएशन एंड सपोर्टिंग स्केड्यूल, जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन आपने किया हुआ है. सो व्हाट इज द रिलेवेंट पार्ट ऑफ इट. सो बैंक रिकंसिलिएशन के लिए आपको चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसा बैंक स्टेटमेंट. क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशन अगर आपने किया हुआ है तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है क्रेडिट कार्ड. देन रिव्यू क्वालिटी एंड इश्यू आइडेंटिफिकेशन. क्वालिटी कैसी क्या है, जो रिपोर्ट वगैरह हुआ है उसका क्वालिटी कैसी क्या है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. देन 15% फाइनल रिपोर्ट एक्सप्लेनेशन एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन. सो ऑल दीज आर 100% और दी असेसमेंट. ये सारी चीजें हम सिखाते हैं और ये सारी चीजें ये सारे टॉपिक्स के बेस पे आपको जॉब भी इजीली मिल जाती है. And 2026 compliance reference payroll and 1099 example includes section 20 selected 2026 federal reference point, current IRS guidance, sales tax rate, city and state. So accordingly we teach. Now these are the module detailed syllabus content. Yes. Hello. हाँ सर देखा मैंने अंदर. And my voice is properly audible. Okay, then good. Else I got a new hands-free also just for this कि आप लोगों को properly वॉल्यूम वगैरह आए. Because sometimes it's happening कि वॉइस प्रॉपर नहीं आता है. That's why. Let me do one more thing. Just a minute.
So friends, now how about the volume? All good? Crystal clear? Done then. Okay. The, so these are the modules which we are going to cover. The first one module, let me zoom in. Detailed, this is detailed syllabus in module 1, US accounting foundation. So what will teach? What is accounting cycle, source document, debit and credit, no balances, cash versus accrual accounting, entity types and equity accounting, materiality, consistency, ratio, and then documentation, periods, and cutoff, and closing dates, account ethics, and review mindset. So these are the basic things. Then practical. In a practical way, we go with the practical bookkeeping, like customer setup, their invoice and sales receipt, customer payment and undeposited funds, etc., credit memo, record write-off, vendor setup, bill payment, vendor credit, bill payment, bank paid, their transaction, bank reconciliation, credit card. Actually, why we have organized this वेबिनार जस्ट बिकॉज कि बहुत से लोगों को का ये प्रॉब्लम था कि दे हैविंग डाउट कि हम क्या सीखेंगे और दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग ऑन लाइक ओवर द फोन कॉल दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सप्लेन देम कि हम क्या क्या सीखेंगे नाउ यू कैन सी इट्स अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट containing 137 pages. तो ये सारी चीजें आएगी पेटी के एक्सप्रेस क्लासेस वेदर मैपिंग and expense classification, inventory purchase and COGS, inventory consumptions also we consider into that. And apart from that, uh, prepaid expenses, customer deposits and deferred revenue, loans, transactions, owner shareholders transactions. So this covers your customer center, vendor center, start of accounts, products and services, internal adjustment entry, month end adjustment entries also covered into that. And out of that, uh, after it, let's cover accounting and adjustment entries also, where accrued expense. These are main things. Accounting and adjustment entries. This is the part of your bookkeeping. Okay. There are so many candidates having knowledge about this bookkeeping, but it's not about all bookkeeping. You must have to understand account and adjustment entries, like accrued expense, reversing accruals, accrued revenue, deferred revenue, depreciation. I'm damn sure कि ये सारे जो नाम है आपके लिए थोड़े टफ रहेंगे, but when you come on the board and when you learn it, it becomes the accrued expense है, reversing है, accrued revenue, deferred revenue, depreciation, amortization of intangible assets, depreciation for the tangible assets, bad debts and allowances, inventory adjustment, payroll, accruals, that means payable create करना, payroll accrual that means payable create करना, and on top of that we can say कि interest accruals मतलब kind of payable you create it, then reclassification of entries, correcting entries, estimation tie-up, true-up period, prior period and opening balance issue जो भी है वो you have to adjust it and how to do it we teach you. And you have done bookkeeping, you have done accounting, but what about the review? So you have to do review and quality control part also. That's covered in our trial balance review, general ledger review, books and credit card review, account receivable, accounts payable review. So those are covered into that in our training. Then revenue review. That is called we can say revenue reconciliation. And expense review, balance sheet review, P&L analytic review, review notes and query management. So all the things you need to work out properly, and you have to check each and everything whether you are doing that properly or not by following your steps. After that, the fifth module, month end and year end finalization.
close calendar and responsibility metrics, bank finalization, AR finalization, AP finalization, prepaid schedule, fixed asset, load, interest, payroll liability, and tax liability, deferred revenue and accruals, final year adjustment entry, locking period and rollover. Then US payroll, accounting and review. Like how to do payroll, what is social security, Medicare, Kuta, Suta, then the 401k deduction, then garden deduction, what are the capping for each and everything, what is the state and federal taxes, how it is gonna calculated on in a tax. If we cover in our taxation lectures. Okay, so everything is a part of it. So payroll, workflow and sources, gross pay, net pay deduction, social security, Medicare, federal state taxes, payroll journal entries, payroll clearing and bank reconciliation, and 940 reconciliation, how to do it, 940 also is a part of it, then W2, W3, year end reconciliation, and payroll review checklist. So all these are the part of our training. Then US tax, that is a part of your US sales tax, bookkeeping and compliance support. Sales tax fundamentals, nexus and registration concept, taxability, exemption and certificate, sales tax collection liability, then marketplace related activity, sales tax returns, how to like we in our training we are not teaching how to file the tax return. I mean sales tax. That you can just when you once you enable that in your QuickBooks, the system is automatically calculating the taxes, and you just need to pay them. That's it. And if you want automation into that, so for the automation, what you can do for the automation, you can integrate TaxJar software. So from the TaxJar software, that TaxJar collects the data from the QuickBook and automatically they calculate the taxes and file them on time. So like sales tax return and payment, sales tax reconciliation schedule, and sales tax review and common errors. Module 8, Form 1099 bookkeeping and year-end support. So how and why we have to do 1099? What are the cappings? Then different kind of 1099, 1099 information reporting overview, home W9 collection and vendor setup, how to do it. Then NEC, non-applying compensation, training reference. Then business income categories, payment method 1099 review, 1099 vendor report reconciliation, correction, tax identification number issue, this is TIN. Okay, sorry. And 1099 years है. Then financial statement and management reporting. कौन सा रिपोर्ट बनाना है, कितने रिपोर्ट्स बनाना है. It's not like the profit and loss बना दिया. That's it. You have to prepare balance sheet, P&L, cash flow along with their schedules. Okay. Hi, sorry to interrupt. Your voice sometimes goes very low. Okay. So anyone having the same problem? No, your voice is audible to us. Okay. So Kirtana, Gopi, could you please fix your audio because just for the best, I would say performance, I have used that hand spray. Okay, so Krishna, could you please fix your that device if it is not properly? Okay. Yeah, because I'm getting your voice very loud. Not your, everyone's voice is very loud. Okay, thanks for the notes. In financial statements and management reporting, we prepare all this. How to prepare balance sheet, how to reconcile each and every line item of balance sheet that we cover in our training. Because QuickBooks having facility to reconciliation, to reconcile not only bank or credit card, you can reconcile each and every line item of balance sheet. That's the option available in that. Okay. Then supporting schedule and final candidate project. Prepaid accruals, deferred revenue. These are the main here prepaid expense, accruals, accrued expense and accrued revenue both. Then deferred revenue. These are four pillars for the accounting. Once you know how to prepare them, how to report them,
and how to reconcile them. You are almost done with the accounting. After that, depreciation and as I told you, all these are reconciliation part. Loan, payroll, sales tax, and 1099. All these are reconciliation part. But the main thing is if you are not processing this properly, so neither your P&L nor your balance sheet will give you the proper numbers. Okay, and here concept and practical explanation with the example we teach. Uh, Let's say for the accounting cycle and source document, a client pays 5,000 for an invoice that was recorded earlier. The receipt should be matched to the customer deposit to the correct bank account and apply to open receivable rather than posted directly to income. The meaning is that invoice was already recorded, so you have to adjust the payment against the invoice. You should not record directly as a payment. And when one of the small, I would say, one of the small formula on which we are working, almost we all are aware about that, but sometimes we miss it. And I'm going to share my Excel sheet for the same, and I'll show you. Once you guys having this knowledge, window, Excel. Just keep in mind one thing. I hope you guys are able to see my screen of Excel. Is it? Okay, done. So the first one, uh, increase your assets and expense. Whenever increase, debit them, and liabilities and income. Whenever increase, credit them. Just follow this simple rule, and you guys will never make any mistake for the journal entries. For any journal entry, you have to follow these steps only. If it is decrease, so credit it. And if it is liability decrease, then debit it. Okay. So this is a simple method. Here we are going to go with so many transactions and all of them having the same concept. See, client pays 5,000. So once they pay, your bank balance increase, and bank balance, that is your assets, increase, debit it. And at the same time, your AR, that means current assets, that is also decrease. So credit it. So here, bank debit, AR credit. The simple concept. Then debit, credit, and normal balances. The business paid 1,200 monthly rent for from the operating bank account. Rent expense increase and bank decrease. Rent expense increase and bank decrease. So as I told you, expense increase, debit it, assets decrease, credit it. So here, bank is your current assets, kind of, okay? So that is decrease. So you have credited it. The same thing you chart of account design. A company has three accounts named software, software expense, and apps. The reviewer consolidates recurring charge into a single software and subscription expense account and keeps capitalized software separately in fixed or intangible assets. Okay, that depends upon the amount of the software, like what you have purchased, whether you have to that capitalize it or not. Okay, cash versus accrual accounting. Conceptual how to do that. Cash will recognize many items when cash move. Accrual will focus on when revenue is earned and expenses are incurred. US accounting will commonly maintain accrual basis for management reporting even when tax reporting may differ. And it must understand receivable, payable, accrual, prepaid, deferred. These are the main things. This is the main part of your training. आप लोगों को ये चीज समझनी है. आप एक बार ये चीज समझ जाते हो, देन बहुत सी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी.
What is that? Receivable, payable, accruals, prepaid, deferred revenue and cutoff. Cutoff in terms of पे पीरियड, तो उसके बेस पे आप कोई भी चीज ये जो है अक्रूवल है, प्रीपेड है, डिफर है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. यूटिलिटीज हैंडल रिलेटेड टू दिसंबर बट वेंडर इनवॉइस इज अलाउड इन जनवरी. हमें दिसंबर में एक प्रोविजन डालना होगा विच इज कॉल्ड अक्रूवल्स. यू हैव नॉट पेड इन दिसंबर बट पेएबल इन दिसंबर ना, तो एक्सपेंस डेबिट and your liability increase, accrued expense payable. Okay, so this is increase and adjustment. Entity type equity account. A sole owner contributed 25,000 start business. Bank balance आपका increase हुआ है 25,000 से increase and owner's capital. तो business owner से वो fund लेकर आए हुए. So kind of all the transaction like materiality and consistency documentation, जैसे कि 7,500, it's a big amount, so we have capitalized it. So we also going to learn materiality ratio, period, cutoff and closing dates. Then account ethics and review mindset. It can be then apart from the customer payment and undeposited fund, कैसे क्या होगा? जैसे ही पेमेंट आता है कस्टमर का, वी आर नॉट गोइंग टू डिपॉजिट इनटू द बैंक अकाउंट. इंस्टेड ऑफ दैट वी ब्रिंग दैट अमाउंट इनटू अनडिपॉजिटेड फंड. क्योंकि अगर कंसोलिडेटेड डिपॉजिट हो रहा है तो वी जस्ट लाइक हियर इट इज 3 कस्टमर पे 1,000 ईच एंड बैंक तो 3,000 डिपॉजिट ओनली. तो ये केसेस में क्या होगा कि 1,000 की 3 एंट्रीज होगी, 1,000 की 3 एंट्रीज होगी और every entry is like undeposited fund debit to accounts receivable, and after that into the bank deposit, bank account debit with 3,000 and undeposited fund 3,000 credit. Credit memo, refunds and writes off like a sales return and allowances. So ये vendor setup, then bills payments, vendor credit payments, bank fees transaction matching, bank reconciliation, credit card bookkeeping and reconciliation, petty cash and cash flow, expense classification or vendor mapping, inventory purchase and COGS, fixed asset purchases, how to capitalize it, prepaid expense, and their concept like expense debit to prepaid and how we have to reverse it out and how to adjust it. Okay. Sir, sorry to interrupt you, sir, but we can only see Excel. Now good. Okay. Right. Okay. Sorry guys, actually I was on Excel and I just moved into PDF. So guys can do communication. It's not a one way. I am not here just to speak. आपकी कोई भी क्वेरी है, you guys can ask. That's the reason I'm here. कि आप लोग की जो भी क्वेरीज है आप लोग पूछ सको. Okay. So let's go with the again total accounting cycles जो है उनका डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट, देन डेबिट क्रेडिट नॉर्मल बैलेंसेस, स्टार्ट ऑफ अकाउंट का डिजाइन कैसे करना है, लाइक सॉफ्टवेयर एंड सब्सक्रिप्शन की मल्टीपल अकाउंट्स है तो वी हैव टू मर्ज देम एंड मेक इट सिंगल वन. कैश वर्सेस accrual accounting, cash is recognized many items and cash moves, accrual based focus on when revenue on and expenses are incurred. So cash based accounting, accrual based accounting, उनका डिफरेंस, एंट्री टाइप एंड इक्विटी अकाउंटिंग क्या करना है, एंट्री कैसे होगी, मटेरियलिटी कंसिस्टेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन, अगर कंप्यूटर इक्विपमेंट परचेस किया हुआ है एंड विद द बिग अमाउंट so you can capitalize it also and over period of time you can depreciate also. Period cutoff and closing dates, accounting ethics and review, customer setup invoices, customer payments and deposit fund. Yes, this one we were here. You have received 3 customer pays 1,000 each and the bank hold on 3,000 deposit. So how we are going to record this transaction? To the bank deposit to the payment receipt module, we are going to record and post fund into undeposited fund. Okay, we are going to post the fund into undeposited fund like
बैंक अकाउंट डेबिट, अनडिबिटेड फंड अकाउंट डेबिट एंड AR क्रेडिट। वैसे 3 एंट्रीज होगी और उसके बाद एक बैंक डिपॉजिट की एंट्री होगी कि जिसके अंदर हम ऑल दोज 3 एंट्रीज वी आर गोइंग टू कवर यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि बैंक स्टेटमेंट में आपको मतलब जो बुक्स है उसके अंदर 3000 की सिंगल एंट्री दिखेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। क्रेडिट मेमो, रिपोर्ट्स एंड राइट ऑफ, ये भी चीज यहाँ पर आएगी। वेंडर सेटअप एंड बिल्स, वेंडर का सेटअप कैसे करना है, उनके बिल्स वगैरह कैसे रिकॉर्ड करने हैं, उनके अंदर अगर वो 1099 में एप्लीकेबल है तो वो कैसे वर्कआउट करना है, तो एवरीथिंग कवर ओवर है। देन बिल पेमेंट, वेंडर क्रेडिट्स एंड प्रीपेमेंट। प्रीपेमेंट को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेमेंट इट इज योर current assets. Okay, so you have to post into prepaid expense, and over a period of time you have to adjust it against the expense, respective expenses. And bank feed, transaction matching, bank feed कैसे करते हैं, डेटा अगर इंपोर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। इट इज नॉट लाइक जस्ट के डेबिट और क्रेडिट का कर देंगे बात खत्म, इट इज नॉट लाइक दैट। 500 transaction in 10 minutes, how to import, we are also going to teach that. तो हार्ड वर्क नहीं करना है, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इज नॉट आस्किंग फॉर द हार्ड वर्क, दे आर लुकिंग फॉर द स्मार्ट वर्क। किसी क्लाइंट ने बैंक स्टेटमेंट भेजा हुआ है PDF फॉर्मेट में, तो बैठ के एंट्री नहीं करनी है, यू हैव टू कन्वर्ट दैट PDF इनटू एक्सेल, एंड फ्रॉम द एक्सेल टू इंपोर्ट फॉर्मेट, एंड फ्रॉम इंपोर्ट फॉर्मेट टू QBO, you just have to categorize them, that's it. Understood? Yes. Then credit card, bookkeeping and reconciliation. Credit card, that's your liabilities, how to reconcile it. And the same way, QuickBooks having their own facility where you can integrate your QuickBooks, your bank account or credit card account into your QBO, and just on a single click you can pull down all the transactions in your system. Then you just have to categorize that. उसके अलावा भी एक और ऑप्शन है, रूल्स। वंस यू क्रिएट दी रूल्स, तो सिस्टम जो है अपने आप ट्रांजैक्शन पोस्ट कर देगी रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, और क्विकबुक्स अकाउंट जो है वो हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे। ये 137 पेजेस की जो PDF है और हार्ड कॉपी दोनों हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, दिस इज योर सिलेबस। पेटी कैश एंड कैश कंट्रोल, एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट क्रेडिट जो भी होता है, एक्सपेंस क्लासिफिकेशन एंड वेंडर मैपिंग फॉर 1099। ओके, वेंडर मैपिंग जो होगा वो 1099 के लिए होगा, कौन से वेंडर जो है वो एप्लीकेबल है फॉर द 1099। प्रीपेड सॉफ्टवेयर, जो भी अगर आपने प्रीपेड दिया हो सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट किया हो, तो इन्वेंटरी परचेज एंड COGS टू, ये जो कंसेप्ट है ये समझना। लेट्स डू सम इंट्रोडक्शन नाउ। कॉस्ट, प्राइस and name boxes. चलो, now I want to know कि इसके अंदर this is 10, this is 20. My screen is visible to everyone? Yes. Yes, sir. So here cost, that means purchase price, और price मतलब selling price. All good now? Yeah. Okay, so this is cost 10, price 20. Now you have purchase 200 units at the rate of 10. So your purchase cost is 2000. Okay, 2000. yeah. And the journal entry for the same is
if you are managing your inventory, so inventory assets debit with 2000, and if you have purchased this on credit, so accounts payable. Editor. Okay. In India, we can say sundry debtors, correct? Hmm. This one. Now, you have sold 200 units at the rate of 60, sorry, 200 units you have sold at, let's make it 25. So, the amount is 5000, right? So, when you make sell of this account, consider कि ये हमने सेल किया हुआ है क्रेडिट पे, तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट विथ 5000 एंड क्रेडिट क्या होगा सेल्स अकाउंट, चलो ठीक है, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम. ओके, तो व्हाट अबाउट सीओजीएस? इन्वेंटरी तो आपकी कम हो गई ना, तो इन दैट केस सीओजीएस डेबिट विथ 2000 एंड योर इन्वेंटरी असेट्स क्रेडिट विथ 2000. द इफेक्ट इज बैलेंस शीट में से इन्वेंटरी गायब हो गई, डेबिट एंड क्रेडिट सामने सामने नील. हम्म. और ये सीओजीएस जो है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड दैट इज कॉल्ड सीओजीएस. ओके, तो ये एंट्री होती है जब भी सेल होता है, तब जब स्टॉक सेल होता है तब चार लाइन आइटम की जर्नल एंट्री होती है. बहुत से लोगों को खाली एक ही कंसर्न होता है कि हाँ ए आर डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बट इट इज नॉट लाइक दैट. सीओजीएस भी ब्रैकेट में है. अगर आप इन्वेंट्री कंजप्शन जो है वो मंथ एंड में एक साथ नहीं डाल रहे हो, और इन्वेंट्री बाय इन्वेंट्री फीफो मेथड या लिफो मेथड या एवरेज मेथड जो भी आप यूज करते हो, तो अकॉर्डिंगली द ट्रांजेक्शन शुड बी पोस्टेड ऑटोमेटिकली, और ये क्विकबुक्स के अंदर ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है, और इनका इन डेप्थ कैलकुलेशन भी बताया जाता है. ओके, नाउ लेट्स से यू हैव रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, सो 5000 and accounts receivable 5000. Clear? Okay, so this kind of entries we are explaining you during the transactions. Now, fixed asset and purchase. Fixed asset कैपिटलाइज कैसे होता है, फिक्स एसेट कैपिटलाइज कैसे होता है, क्रेडिट पे परचेज किया तो अकाउंट पेबल आएगा, कैश में परचेज किया तो बैंक अकाउंट आएगा. प्रीपेड एक्सपेंस शेड्यूल्स, देन कस्टमर डिपॉजिट एंड डिफर्ड रेवेन्यू. कस्टमर डिपॉजिट एंड डिफर्ड रेवेन्यू बोथ आर डिफरेंट. जब कस्टमर आपको डिपॉजिट करते हैं, सो दैट इज योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जबकि डिफर्ड रेवेन्यू ऐसा है कि इनवॉइस ऑलरेडी क्रिएटेड, पीरियड ऑलरेडी प्री डिफाइंड, और वो पीरियड के अंदर आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है. How many of you would like to understand the concept of deferred revenue, prepaid accruals? If you guys are interested, then I can explain you that part. और deferred revenue का automation भी है QuickBooks के अंदर, that we teach during the training. Yeah, paid in advance. So that is totally different thing. Paid in advance, that is totally different thing. Sonal Agrawal, I think you are qualified, right? CA. Yes, sir. Okay, fine. So we are following the concept of deferred revenue, prepaid accrual, because we are doing accrual based accounting. Yes. तो अगर आप लोगों को अकाउंटिंग सीखनी है तो यू कैन इजीली. अकाउंटिंग सीखना इज नॉट लाइक सी डेबिट एंड क्रेडिट, इज नॉट अकाउंटिंग. जो भी आप डेबिट कर रहे हो वो कहाँ जा रहा है, क्रेडिट कर रहे हो वो कहाँ जा रहा है, बैलेंस शीट में कहाँ पे उसकी इफेक्ट हो रही है, और P&L में उनकी कहाँ पे इफेक्ट हो रही है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग्स. वो सब आपको पता होना चाहिए. अगर वो आप सबको पता है तो हो पाएगा. एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू गो विद द core accounting and core training.
लोन ट्रांजेक्शन्स कैसे होने चाहिए, प्रिंसिपल अलग जाना चाहिए, इंटरेस्ट अलग जाना चाहिए और बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो दिस द वे ऑफ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तक शायद आपको ऐसा होगा अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन कितने आते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 टाइप के। इन दिस पीडीएफ यू रियलाइज 23 नंबर, 24 accrual accounting, फिर 25 reversal accounting, reversal accruals, and accrued revenue. accrued revenue मतलब इनकम रिसीवेबल है बट रिसीव नहीं हुई है, रीजन कि आपने इनवॉइस अभी रेज ही नहीं किया हुआ है। तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे होता है वो समझाया जाता है। जैसे कि अगर which one you would like to learn or understand, accrued revenue, deferred revenue, prepaid or accruals, what guys you would like to understand? I can teach you that, तो आप लोगों को आइडिया आएगा हाँ ये चीज होगी। एंड लास्ट जो वेबिनार था वहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस हो रहे थे। दिस टाइम यू गाइस आर वरी अबाउट कि क्या है, क्या पूछना है, एनी क्वेश्चन, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, क्या कौन से फील्ड में आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्कोप क्या है, एनीवन, कोई क्वेरी ही नहीं है आप लोगों को? Um, Okay, all level. So, Preet Patel, what is your qualification? Sir, MCOM. MCOM, okay. And I think you have already enrolled, is it? Yes, sir. Okay, तो फिर तो आपके सिलेबस में आएगा ही ना वो रेवेन्यू Yes, का। हाँ, there. yes, sir. Okay, no worries. Let me explain you. Just a minute. Okay, so sorry guys. So here, let's go with the first. We are going with uh, the first part, prepaid expense. चलो पहले prepaid expense start करते हैं, then slowly prepaid expense. Okay, then deferred revenue, accrued expense, accrued revenue. What is prepaid expense? कि जो आपने एडवांस में पे कर दिया हुआ है, जस्ट लाइक कि इंश्योरेंस 12 के आपने पे कर दिया हुआ इन एडवांस फॉर द 12 मंथ। सो सिंपल प्रीपेड expense debit. This should be in your balance sheet, okay? And you are paying through bank account, so that this is also part of your balance sheet. And as and when by the month, you have to make the adjustment. Just like insurance expense debit with 1000 because you have paid for the 12 months. That's the simple. This is your prepaid expense. कंफ्यूजन आपको डिफर्ड रेवेन्यू एंड अक्रूड रेवेन्यू में ही होगा और कहीं नहीं होगा। नाउ so this is the part of your prepaid expense. Now let's go with the accrued expense. दोनों expense हम देख लेते हैं so that becomes easy for you to understand. What is accrued expense? Accrued expense, that means कि expense payable but not paid. Expense is payable but we haven't paid it yet. Mr. Nitish,
For that, you need to come in our class, not here, because we cannot teach each and everything over here. Here, we can go with the bookkeeping and accounting part only, and few of that. अब यहाँ पे revenue expenditure, हाँ, अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह समझाऊंगा तो दे आर आउट ऑफ 30 शायद 20 लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। तो आई एम सॉरी बट वी आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन दिस। और ये जो है इट इज नॉट अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर फॉर द योर फ्यूचर और मे बी द chances of jobs in outsourcing industry. Yeah, that is if you learn both, so that becomes useful for you to get hired in outsourcing industry. क्योंकि अगर आप दोनों सीखते हो Sonal ji, can you please mute yourself? Yes, sir. Can you please mute yourself? Actually, the voice is coming. Okay. दोनों सीखना इसलिए बेटर है क्योंकि उसके बेस पे आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। कोई भी कंपनी में आप जाओगे और वो लोग देखेंगे कि आपके पास ड्यूअल स्किल्स है, यू हैव ड्यूअल स्किल्स, तो दे गोना हायर यू। और कभी भी कोई भी चीज हमें पता ना हो और उससे अगर आइडेंटिफाई करना है तो खुद को सामने वाले के साइड रख के देखो। अगर आप कंपनी के ओनर हो, अगर आपके पास कोई कैंडिडेट आ रहा है, उनको अकाउंट भी आता है, उनको टैक्सेशन भी आता है, तो अब 3 कैंडिडेट है आपके पास, एक को अकाउंट आता है, एक को टैक्सेशन आता है, एक को दोनों आता है। एक को आप पैकेज दे रहे हो 30,000, दूसरे को दे रहे हो 30,000 और जो तीसरा आया हुआ है जिसको दोनों चीज आ रही है इज डिमांडिंग 40,000। बट ऑब्वियसली आप 40,000 पे ही जाओगे क्योंकि आपको ड्यूअल स्किल्स मिल रही है, वन पर्सन विथ ड्यूअल स्किल्स, तो यू वांट टू हायर देम। सो दैट इज व्हाई कि अगर आप दोनों में जाते हो तो ही बेटर है और स्कोप ज्यादा है। ओके, या एनी अदर क्वेश्चन गाइस? Sir, in my QB, I am not showing what is the reason because of the entries are not done on QuickBooks ID. Statement is not showing. Which statement you are talking about, please put in? In my QB ID, statement is not showing. कौन सा statement? Statement जो है, it is all about the customer statement. वो आपको लेफ्ट साइड में प्लस न्यू पे क्लिक करोगे तो लास्ट सेकंड ऑप्शन है एंड अनदर वन इज कस्टमर सेंटर के अंदर जाकर पर्टिकुलर कस्टमर के मॉड्यूल में जाओगे तो वहां पे राइट साइड के अंदर न्यू ट्रांजेक्शन पे ड्रॉप डाउन है, वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे लास्ट ऑप्शन है दैट इज इम्पॉसिबल। स्टेटमेंट ऑप्शन हमेशा आता ही है। आपकी जो स्क्रीन है वो फुल होगी, कंट्रोल स्क्रॉल डाउन करना या तो कंट्रोल माइनस करना तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी तो लास्ट में वो ऑप्शन दिख जाएगा। ओके, कल वही हुआ था एक कैंडिडेट को। फाइन देन, सो ये था प्रीपेड एक्सपेंस एंड accrued expense। अब हम समझा था accrued expense, that means the expense which is payable not paid is yet। payable है बट अभी आपने पे नहीं किया हुआ है, so how you gonna do that? एक्सपेंस है, पेएबल है बट आपने अभी पे नहीं किया हुआ है, so how you gonna do that? पहले तो एक्सपेंस पेएबल है तो चलो एक्सपेंस हुआ है हमारा बट हमने पे नहीं किया, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड पेएबल, तो एक्सपेंस पेएबल। अगर आप इसे दूसरी तरह से देखते हैं तो किसी वेंडर का बिल आया हुआ है कि जो है कंसल्टिंग, चलो कंसल्टिंग चार्जेस 1000 का, अभी आपने उसे पे नहीं किया तो आप क्या करोगे? अकाउंट्स पेएबल। अब अकाउंट्स पेएबल जो है करंट लायबिलिटी हुई, राइट? द सेम थिंग दिस वन आल्सो करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमने
फर्क इतना है कि हमें बिल नहीं मिला हुआ है, और यहाँ पे ऐसा है कि बिल मिल चुका है, दोनों की इफेक्ट एक ही होती है। तो अगर बिल नहीं मिला हुआ है तो हम उसका प्रोविजन करेंगे। तो हियर वी आर गोइंग टू डू दैट कंसल्टिंग एक्सपेंस डेबिट एंड अप्रूव्ड एक्सपेंस क्रेडिट, दैट इज आवर लायबिलिटी। और जब उसे हम पे करेंगे, एट दैट टाइम वी हैव टू रिवर्स, बैठना बाहर जाना नहीं है। और जब हम उसे पे करेंगे, उसे रिवर्स करेंगे, और यहाँ पे जब पेमेंट करने का आएगा तब हम उसे नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। इससे होगा क्या, सपोज कि ये 731 का ट्रांजेक्शन था, ठीक है, 731 में हमने उसका प्रोविजन किया। अब 4 तारीख को इसका पेमेंट किया, तो हम 8/4 को क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन रिवर्स आउट कर देंगे। वाई? क्योंकि हम ये क्यों करेंगे, तो रीजन इज कि 731 को आपका P&L हिट हो गया एक्सपेंस से, और सेम टाइम आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई। अब 8/4 को जब आप इसका पेमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे आपने इसको रिवर्स किया, तो आपकी बैलेंस शीट में जो ट्रांजेक्शन था वो तो सामने सामने नील हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे चलती है, मतलब आगे का बैलेंस होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो 8/4 को जब अगर आप ये देखोगे तो ये आपको 0 दिखेगा, मतलब ये हो गया खत्म। बट यहाँ पे जो P&L है वो आपका अगस्त मंथ का माइनस में चला गया, बिकॉज वी हैव क्रेडिटेड दैट। और फिर जब आप ये ट्रांजेक्शन एज अ रेगुलर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, कंसल्टिंग चार्जेस जो है यहाँ पे डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे डेबिट हुआ, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर अक्रूड एक्सपेंस एंट्री। ये एक एंट्री, ये एक एंट्री, ये एक एंट्री, और ये एक एंट्री। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? डायरेक्ट बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा। राइट, दैट इज द राइट क्वेश्चन। बोलो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस से पूछिए, डायरेक्ट बैंक अकाउंट मतलब डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पेमेंट क्यों नहीं किया, राइट? हम्म, अब हाँ, अब इसका मैं आंसर आपको ये दूं कि सपोज आप एक कंपनी में हो कि जहाँ पे आपके पास सेल्स एजेंट्स हैं जिनको आप ओके। कमीशन पे करते हो, या तो एजेंसी है, ठीक है, तो 20 एजेंसीज ऐसी हैं कि जिनको आप मंथली पे करते हो कमीशन, 40 एजेंसी ऐसी है कि जिनको आप क्वार्टरली करते हो, ओके, और 100 एजेंसीज ऐसी है कि जिनको आप हाफ ईयरली पेमेंट करते हो, और 50 एजेंसी ऐसी हैं कि जिनको आप ईयरली पेमेंट करते हो। पेमेंट मतलब कमीशन, सेल्स कमीशन, ओके। ओके। नाउ जनवरी मंथ के अंदर, ये रहा जनवरी मंथ, ठीक है, जनवरी मंथ के अंदर आपको 20 ये जो है एजेंसी उनको पेमेंट करना है, तो आपने 31st को आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, डन। हम्म, 30 को आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी 20, क्योंकि 20 को आपको पेमेंट करना था, और इसका प्रोविजन 31st को। अब इसका पेमेंट आप स्टार्ट करते हो 3 तारीख से, मतलब 3rd Feb से आपने काम इनका पेमेंट करना स्टार्ट किया, ओके, इनका पेमेंट करना आपने 3rd Feb से स्टार्ट किया। अब 20 में से 17 जो थे उनका हो गया डन, और 3 के ट्रांजेक्शन के अंदर आपको आ रही है एरर, IFSC कोड की एरर आई, चलो ठीक है। हम्म, अब ये जो पेमेंट था, दूसरे भी और भी काम थे आपके पास, तो ये स्किप हो गया। अब मार्च मंथ आया कि जब 31st मार्च को आपने 40 नए प्रोविजन किए, हम्म, ओके। अब 40 नए प्रोविजन किए और उसमें से आपको पेमेंट करना था, तो मई मंथ के अंदर आपने 3rd मई को स्टार्ट किया पेमेंट करना। 30 में से 40 में 36 ही डन हुए, 4 रह गए। कोई भी होता है, एक्चुअली वी आर ऑल्सो हैंडलिंग फ्रेंचाइजी, हमारे यहाँ पे सेम चीज होती है कि रह जाता है पेमेंट करना,
पेमेंट करना रह जाता है, मतलब कोई ना कोई क्वेरी से बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रॉपर ना हो, या तो ट्रांजेक्शन किया हो, या तो बैंक सर्वर डाउन हो, कुछ भी हो, क्योंकि 40 ट्रांजेक्शन। तो इससे होगा क्या एक्चुअली, अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे साल के आपके कितने ट्रांजेक्शन हुए? 210। 210 नहीं, ज्यादा हुए। मंथली 20, मतलब 240 ये हो गए, ये क्वार्टरली है मतलब 160 ये हो गए, ये हाफ ईयरली है मतलब 200 ये हो गए, और ये है 50। तो फिर टोटल ट्रांजेक्शन होते हैं 650। क्विकबुक्स के अंदर एक फैसिलिटी है, जब आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हो तो एक जर्नल एंट्री नंबर पड़ता है, ओके, जैसे कि 176। और जब आप उसे रिवर्स करते हो तब नया नंबर पड़ता है R176। इट्स अ प्रैक्टिकल वे टू अंडरस्टैंड। अब ऐसी ही बहुत सी एंट्रियां हैं, जैसे कि 176 है, 186 है, 189 है, 150 है, 211 है। ऐसी आपके पास कितनी आएगी? टोटल 650 एंट्रीज इन अ ईयर। अब 186 जो था उसका तो आपने पेमेंट कर दिया है, चलो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट अगर हम डाल देते हैं तो। अब 150 का बाकी है, 189 का बाकी है, 124 का हो चुका है, 629 का उसका बाकी है, और 250 का हो चुका है। चलो अब इस तरह से अगर मेरे पास ईयर एंड में अगर मुझे चेक करना हो कि कितने ट्रांजेक्शन का पेमेंट बाकी है, मतलब कितने प्रोविजन का पेमेंट बाकी है, कितना प्रोविजन का पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये अगर मैं मैन्युअली रिकनसाइल करने जाऊंगा तो मुझे कितनी एंट्री चेक करनी होगी? 1300, क्योंकि 650 प्रोविजन है और 650 उनका सामने का पेमेंट, पेमेंट। करेक्ट। तो टोटल 1300 एंट्री मुझे चेक करनी होगी। अब ये जो दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा, क्विकबुक्स के अंदर से रिपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा, ओके, कंट्रोल एच करूंगा, जहाँ पे आर लिखा हुआ है वहां पे मैं ब्लैंक कर दूंगा, रिप्लेस ऑल हो गया, ये ओके हो गया, क्लोज। होम पे जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, डुप्लीकेट। मुझे 2 मिनट में पता चल जाएगा 1300 एंट्रीज में से कि कौन सी पेमेंट, कौन सी का पेमेंट नहीं हुआ है। ओके। साउंड लॉजिकल? Yeah. Okay, that is the reason we make this reversal. Okay, तो ये अंदर आएगा। Vijay Singh, is this course help in switching from UK accounting to US account? What obviously UK accounting में आपको VAT वगैरह या GST वगैरह होगा, बट इन हियर स्टेट एंड स्टेट वाइज टैक्सेस, और आपको एक बार नॉलेज आ जाता है द थिंग ऑफ सेल्स टैक्स, पेरोल एंड सेल्स टैक्स, पेरोल एंड 1099, so you can easily do it। और ऑलरेडी आप इंडस्ट्रीज के अंदर हो तो आपको हेल्पफुल नहीं ही रहेगा। ओके, Okay. सो दिस अगेन, बाकी सब कंसेप्ट समझाने आई डोंट थिंक इट्स टाइम इज ऑलमोस्ट 1 आवर। तो अक्रूड एक्सपेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, 29 पॉइंट एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स, बैड डेट अलाउंसेस, इन्वेंटरी एडजस्टमेंट, पेरोल, तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 500 P&L एनालिसिस रिव्यू, ये सारी चीजें आएगी। ग्रॉस पे, नेट पे डिडक्शन, दिस इज अबाउट द पेरोल। पेरोल के कंसेप्ट भी आएंगे, कैसे क्या करना है, पेरोल वर्क फ्लो। तो पेरोल इन डेप्थ आपको सिखाया जाएगा, उनकी कैपिंग वगैरह जो है 84 तो ये सब आज अंदर आ जाएगी उसको। पेरोल जर्नल एंट्री भी सिखाई जाएगी, रिकरिंग ट्रांजेक्शन भी सिखाया जाएगा, वर्क फ्लो ऑटोमेशन भी सिखाया जाएगा, W9 collection data for 1099 setup, then year-end checklist, profit and loss statement, cash flow statement, fundamental कैसे क्या वर्कआउट करते हैं वो भी सिखाया अंदर जाएगा, केपीआई मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू, फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन, लोन, पेरोल, सेटल जो भी है। नाउ
इस मंथ 20 मॉड्यूल सिलेबस, कितने केसेस हैं, और ये है सारे ट्रांजेक्शन, ये हर एक ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे। बिजनेस सेटअप एंड कैपिटल बैंकिंग मॉड्यूल एंड दैट सिलेबस, कितने मॉड्यूल है इसके अंदर? 20 मॉड्यूल, और उन सबके प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शंस, ये हर एक ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करेंगे। ये रहेगा आपका सिलेबस, 20 मॉड्यूल्स, 25 ईच ट्रांजेक्शन। ओके, This is for accounting course only. Tax course yes. is different. Yeah, tax is total different. Okay. Tax is different. Oh. Do we have recorded after lecture, we can miss classes? Yes. See, now the time. First of all, let me show you this model. What you are going to learn. In case if you miss anything from this, you can tell me. बिजनेस सेटअप कैसे होता है, कैपिटल बैंकिंग कैसे, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट एंड सर्विस रेवेन्यू क्या है, सेल्स ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट, रिटर्न, सेल्स टैक्स, अकाउंट्स पेबल, वेंडर्स, इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, payroll, accruals, bad debts, lease, equity, income, foreign currency, month end, correction, special transaction. तो बेसिक लेवल का ट्रांजेक्शन है आपके पास 1 2 3 4 5 6 15 150 1 2 3 4 5 6 7 175 1 2 3 4 5 6 7 8 200 ट्रांजेक्शन एडवांस लेवल। तो ऑल दिस ट्रांजेक्शन, दिस इज 500 प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपको कराए जाएंगे और ये होगा सारा का सारा लाइव में। एंड अगर आप कोई लेक्चर मिस कर जाते हो तो हर एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग हम गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं। जैसे अभी जो हमने अपलोड किया, ये जो रिकॉर्ड किया हुआ है, द सेम थिंग वी रिकॉर्ड ऑन गूगल ड्राइव फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस इट। तो कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होगा, बिकॉज दिस ट्रेनिंग देयर आर सो मेनी candidates who are qualified chartered accountant or credit manager of the bank or MCOM or MBA student qualified who are working at CA office, and there are so many freshers who are starting their career in outsourcing industry, going to start, they are joining this course. तो वर्किंग प्रोफेशन अगर है तो बट ऑब्वियसली उनकी डेडलाइंस वगैरह रहती है जॉब में, तो एट दैट टाइम दे मिस द क्लास, दैट इज फॉर श्योर। और इसी वजह से हम सारी जो लेक्चर्स हैं उनका रिकॉर्डिंग रखते हैं और रिकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। तो कोई भी लेक्चर आप मिस करते हो, आप रिकॉर्डिंग देखकर चेकअप कर सकते हो। और हमारी जो ट्रेनिंग की जो सिस्टम है, पहले एक मंथ, एटलीस्ट एक मंथ, जब तक पेरोल एंड 1099 कंप्लीट नहीं होता, हम वीक में सिर्फ 3 लेक्चर ही लेते हैं, और तीनों दिन अकाउंट के। रीजन, हर एक को पढ़ने की हैबिट छूट चुकी होती है। अगर 6 डेज कर देंगे स्टार्टिंग से ही, तो उनका भी माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज वाई वी टेक 3 डेज ओनली फॉर अ वीक। जैसे जैसे एक्टिविटीज होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह उनको आ जाता है, आफ्टर दैट वी मूव टू 6 डेज इन अ वीक। और 6 डेज इन वीक के अंदर क्या हो जाता है, 3 दिन अकाउंट एंड 3 दिन टैक्सेशन। और फिर धीमे धीमे 3 मंथ खत्म होते हैं, उसके बाद उनकी क्विकबुक फाइल रिव्यू की जाती है। लेट मी शो यू समथिंग, हम जो फाइल रिव्यू करते हैं उनका रिपोर्ट, संदीप 5 पेजेस रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट है डाउनलोड में डॉक्यूमेंट्स। Yes, you will get this kind of report after reviewing your review of file. ऐसा नहीं कि हमने आपको टास्क दिए, आपने कंप्लीट कर दिए और हमने कंसिडर कर लिया कि हो गए। इट इज नॉट लाइक दैट। हम पूरी फाइल चेक करेंगे, इक्विजिशन है या नहीं है, P&L बैलेंस शीट, रिटर्न एंड इनकम ये है, कितना एक्यूरेट काम हुआ है, एस्टिमेटेड एनालिटिक एक्यूरेसी 58%।
जब तक ये 70% पे अप नहीं जाती है, ठीक है, आपको करेक्शन करते ही रहना है, मिनिमम 70%। कंट्रोल टोटल रिकंसल बट मटेरियल ओपनिंग COGS प्रीपेड डिफर्ड रेवेन्यू, ये सारा आपको मिलता है। कोई भी अकाउंट नेगेटिव है तो उसका रीजन ओपनिंग बैलेंस इक्विटी इज एक्सट्रीमली लार्ज, ओपनिंग बैलेंस इक्विटी 89 एंड रिमेन अनचेंज्ड इट इंक्लूड जॉइंट ऑफर। तो ये सारी चीजें हम देते हैं। रीजन क्या है? पॉसिबल रीजन हिस्टोरिकल बैलेंस और कन्वर्शन एंट्रीज वर प्रोसेस थ्रू द टेम्पररी इक्विटी अकाउंट एंड व्हेन नेवर मैप। रिटर्न अर्निंग इज ब्लैंक, रिटर्न अर्निंग हैज नो बैलेंस बिकॉज़ लार्ज ओपनिंग बैलेंस इक्विटी। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं कि जो माइंड में नहीं होती बट आएगी। द टोटल सीओजी इज नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर है, वो होना ही नहीं चाहिए। सीओजी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आपने जितना सेल किया उससे थोड़ी डबल वापस आएगा। तो ये इस तरह से हम आपको प्रिपेयर करते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन जा रहा है वो सही है या नहीं है, गलत है तो कैसे है। AP cannot be independently validated, account payable है but no AP aging summary was supplied। तो AP aging summary भी आपको रखनी होती है रिपोर्ट्स के अंदर। नेगेटिव प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल, नहीं होना चाहिए। तो ऑल दिस पॉइंट्स वी कवर इन अवर रिव्यू। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते हैं, इन डेप्थ आपको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं क्या करना है, क्या क्या चीजें हो सकती है। Got it? तो ये सारी चीजें इंश्योरेंस अकाउंट में कंसिस्टेंट P&L यूज इंश्योरेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। तो नेमिंग कन्वेंशन जो भी सजेशन है सारी चीजें आती हैं और ये आपको फिर कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ मैथमेटिकली इंटीग्रिटी 20% चाहिए, 20% है। सब लेजर रिकंसिलेशन डाउन है। क्लासिफिकेशन इक्वालिटी 8% ही है क्योंकि नेगेटिव सीओजीएस है, प्रीपेड है, डिफर्ड रेवेन्यू, सॉफ्टवेयर एसेट, ये सब नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी असेसमेंट। यहाँ पे प्रोजेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी 5% ही है क्योंकि लार्ज ओपनिंग बैलेंस है उसका सॉर्ट आउट नहीं है। स्टेटिक पेरोल लायबिलिटी क्योंकि पे कभी हो ही नहीं है। नेगेटिव सीओजीएस एंड अनपेड बैंक मूवमेंट रिड्यूसिंग लायबिलिटी। डॉक्यूमेंटेशन रेडीनेस, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एपी इन्वेंट्री पेरोल प्रीपेड। तो आप लोग जो भी सीखोगे आप ये सारी चीजें सीखोगे, नॉट ओनली डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, दिस इज नॉट ओनली डेबिट एंड क्रेडिट, इट्स अ बिग थिंग कंपेयर टू डेबिट एंड क्रेडिट। ये सारी चीजें आप रिकंसाइल कर सकते हो। तो इन्वेंट्री एसेट नेगेटिव, आपको ये सारी चीजें आ जाएगी। कहाँ से आएगी? ये ट्रांजेक्शन करोगे उसके बाद बैलेंस शीट रेडी होती है और वो बैलेंस शीट हम रिव्यू करते हैं, लाइव में भी रिव्यू करते हैं और उसके बाद रिव्यू रिपोर्ट भी भेजते हैं। जितना मैसअप होगा अकाउंटिंग उतना अच्छा रिव्यू आप सीख सकते हो। तो दिस इज आवर अकाउंटिंग ट्रेनिंग। ओके, दिस इज नॉट ओनली डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप whoever is द कैंडिडेट्स की जिनको ज्वाइन करना था बट उनके माइंड में डाउट था कि हम क्या सीखेंगे, बट आई होप कि अब तो क्लियर हो चुका कि क्या सीखने वाला है। यस मिस्टर, समवन इज रेजिंग हैंड। और किसी को और कोई क्वेरी कि आप क्या सीखोगे, इसके अंदर क्या पता चलेगा, फ्यूचर क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट आती ही रहती है। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपको डाउट है तो एक बार naukri.com है, इंडीड है, लिंक्डइन है, खाली एक बार चेक कर लेना कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ क्या है और अभी रिक्वायरमेंट कितनी है, so that becomes useful for you to take the decision. Do we Bharat, get certificate after completing course? yeah, there are total 4 certificates. Okay. Okay. And which type Uh, of software will be covered in this okay. training? Just a minute. Actually, I'm really sorry, guys. I didn't notice the question in this. AP and AR are the part of payroll. No, AP and AR are not part of payroll. AP that means accounts payable. AR that means accounts receivable. Okay. Payroll that is salary and wages. Do you also offer placement? Yes, Sweta Vanchal, we definitely offer
the placement support because we are getting so many requirements from various companies. आज ही आई हुई है जो हमारे एक कैंडिडेट थे वो यहाँ पे कंपनी में काम करे उनकी वहीं से आई थी रिक्वायरमेंट. ओके. My English isn't strong enough for conversations, so I'm joining your classes. I'm concerned I might face this. क्या नाम है? अफरीन वोरा. अब इतनी तो अच्छी इंग्लिश और कितनी अच्छी इंग्लिश चाहिए आपको? द मेन थिंग इज 3 महीने तक आप इंग्लिश सुनते रहते हो ना तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट जैसा मिलेगा वैसे वैसे आप सीख जाओगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज. ओके. डेबिट क्रेडिट अगर आएगा और बाकी कंसेप्ट आएंगे तो कंपनी एडजस्ट करेगी. यू शुड नॉट. बाद में फिर आप भी एडजस्ट कर ही लोगे. सो डोंट वरी. वो विल टेक आवर लेक्चर. इज देयर एनी फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम? श्वेता पंचाल. The first option is CP Hasmukh sir. Then second one another person. और अगर वो अवेलेबल नहीं है उनकी बैचेस अवेलेबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन इज मी. क्योंकि मेरी बैचेस जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है. अभी मेरी टोटल 5 बैचेस चल रही है जिसमें से 9 to 10:30 PM की जो बैच है दैट इज अवेलेबल फॉर द एनरोलमेंट. बस वही एक बैच अवेलेबल है. बाकी सारी बैचेस जो है वो ऑलमोस्ट ऑन गोइंग हो चुकी है. So only one batch is available, that is 9 to 10:30 PM MWF, Monday, Wednesday, Friday. Okay, so can you provide this syllabus PDF? Kartikeya Chaudhary. Kartikeya, we cannot provide this syllabus as of now because this is our candidate syllabus and we cannot share this to everyone. Okay, जब आप ज्वाइन करते हो then you will get it. भावेश सर यूएस अकाउंटिंग टेक्निकल कोर्स कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? मिस्टर भावेश ये जो कोर्स है ये 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा बट यू कैन कंसिडर दैट 3.5 month. ओके. क्योंकि इतना इजी मतलब जो हमने जो नया सिलेबस क्रिएट किया इट्स अ बिट लेंथी एंड मोर इन डेप्थ. तो 3.5 month. प्लेसमेंट की क्या गारंटी होगी? प्लेसमेंट की गारंटी हम आपको कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम आपके पास लाकर देंगे. रिज्यूम आपका हम आपको प्रिपेयर करके देंगे. इंटरव्यू के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे. अब अगर वहां पर जाके आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर सकते हो या वहां पे आप 100% परफॉर्म करोगे इसकी आप क्या गारंटी दोगे वो मुझे बताइए. डू यू हैव एनी आंसर फॉर दिस कि आप वहां पे आप 100% ही परफॉर्म करोगे? अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको उसका पता ही नहीं है. एंड इंटरव्यू में सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैटर नहीं करता. योर बिहेवियर, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू नोटिस द थिंग्स, योर resume structure, the content which you have mentioned in your resume, everything matters. So rather than guarantee, we can give you the assurance you get the job for sure after the training. And without training, you can try yourself. And once you are done, then you can come. And different company में different software चाहिए हैं. You can check that कि QuickBooks जो है सबसे ज्यादा चलता है. ठीक है. और इसी वजह से हम QuickBooks सॉफ्टवेयर ही सिखाते हैं. QuickBooks आपको आ जाएगा तो Zero भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा. Pallavi N, is placement guidance available? Remote opportunity? Yes, Pallavi, that is for sure. We are providing placement support in Pan India. Actually, we do have our own placement agency now. Yes, Mr. Jayesh Bhai, you have raised another time. Tell me, what is your question? Sir, I just wanted to know these all the classes are for the online. Sorry. Yes, Mr. Jayesh, tell me what you are saying. Hello. हाँ Jayesh भाई बोलो. Is this thing is available for the online mode or for the offline mode as well? Both options available. For the offline, we are available at Ratnakar 9 Square. I hope you have seen the ITC Narmada Hotel near Shiv Engineering. Okay, so Vastrapur. So offline available over there. Another location, satellite PNTC Prahlad Nagar Trade Center. And third option is available for the offline, that is Nicole Ahmedabad East.
Okay, so we have three offline centers, and if you want to join online, so you can join anytime. Okay. Thank you. That was my main concern. That's why. Okay, yeah, fine. Yes, Mr. Karthikeya. Hello, sir. Actually, I have been working for 4 years as a Uh-huh. US bookkeeper and UK bookkeeper for accounting Okay. through a firm. Actually, my intention to join this webinar, actually, I Mm. want to start my own directly reach to the client because I know how much they are paying to the my company for this accounting work, and that we can freelance to the, this work. So, is there any idea to how to reach the directly to client? See, Uh, are you handling clients right now? yes, yes. I'm independently heading the UK clients now. Actually, currently I'm working for the UK clients for bookkeeping and accounting, both sit. Okay, so you are doing only bookkeeping or any other things also? Bookkeeping, accounting, both. What? Their And P&L which? review, balance sheet review, Mm. both. Okay, so and client communication also, right? Through Yes, yes, calls and client communication also. Directly with client, yeah. okay, so what you can do, you can prepare your proper profile into LinkedIn. Okay, Okay, I'm not saying to go in freelancing or other. Okay, I would recommend okay, to go with the LinkedIn, and into the LinkedIn there is an option which is called jobs. okay, 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 if you go in that option, so from there today or tomorrow you will get a call for the interview. That is for sure. Even I don't want that kind of opportunities, but I was just trying, and I got total 4 calls from different companies, okay, and they are offering a good, like a handsome salary, like 48,000 as a basic. okay, Okay, $48,000 per annum. That's the basic salary. So okay. you can go in that section, and from there you can get the connections and everything. So yeah, Also, we can connect with it will the take, yeah, CPA. it will take time, but that works for sure. Yes. Else we can connect with the CPAs or small CPA Yeah, firms. Okay. rather than CPA, you're gonna connect it directly with the client. Small businesses start. Yeah, definitely. They post over there. Or we have to purchase QBO subscription or already they No, have. no, no, no. Actually, what you have to do, you have to ask client to purchase the subscription of QBO, so they will give you their access to you. Okay, okay, okay. Got it. Yeah. And Yeah. in Thank case if you need any kind of help or to onboard the client or support, or if you need any kind of documentation prior to make the client onboarding, so we are ready to support for that as well. Okay, okay. Thank you. Thank you so much for it. Okay. Okay. So, do you also offer placement? Who is that? Abhishek Pandey. Yes, Mr. Abhishek. Definitely, we offer placement because we believe that our training is really good, and candidates are getting jobs easily on a base of that. So yes, we are offering. Which type of certification you provide in accepted by all the recruitment company? I mean, it valid for all the company. Karthikeya Shahu, let me tell you the thing. We are providing total 4 certificates. Not we are providing only one, and that is 3 month internship certificate. Other 3 certificates you have to get from QuickBooks itself. You have to give exam into QuickBooks. So you will get bookkeeping certificate, accounting level 1 certificate, and accounting level 2 certificate. Okay, so you will get total 4 certificates. First for the Abhishek Pandey, what will be the fees? Wait a minute, आपकी बारी आएगी. Okay, which type of certificate? So there are 4 certificates. Okay, the first internship certificate, second one bookkeeping from QBO Institute, third one accounting level 1 from QBO, and the fourth one accounting level 2 from QBO.
So these are the certificates which you are going to get. Okay, Shweta, when should I enroll? Is it possible next month? Shweta, that's up to you. We have ongoing batches. If you want to enroll by the next month, so that is fine. But yes, my batch is not available till Diwali, because after Diwali, my batch will be there because I am already occupied with all the batches. So you will get another tutor batches, and in case if you want to enroll now, then you will get my batch. Else after Diwali. Okay. Uh, this one done. Any exam will be there for this course. So yes, we take exam. Once you complete your QuickBooks file, we review that, and after that, we send the report which we have seen recently to the candidates. The candidates have to make changes, necessary changes into that, and after that, we take their exam, written exam, and once they clear that written exam, we conduct their mock interview. And mock interview with me, I ask them nearby 30 questions, and a written exam also, and oral exam also. And after that, once they qualified with it, we prepare their resume and we share their resume with our clients. Okay, so this is the things. Uh, okay, now Afin Vora, what is the fee structure of your classes? Okay, so the fee structure, let me tell you. Accounting, taxation, these are our fees. And now one go payment plan. So this is this one. Okay, and if you enroll in the next 5 days, so this is for you guys, whoever joined the webinar. Clear? Now, what will be the fees? Abhishek. Okay, Afin Vora, I gave you answer. What will be Afin? Okay, Abhishek, also you got the answer. Oh, Pallavi, also you got the answer, right? And what will the timing for online classes? So, Abhishek, let me tell you, we have batches starting from 7 a.m. Uh, 7 to 8:30 a.m., 9 to 10:30 a.m., 12:30 to 2 p.m., 4:30 to 6 p.m., 7 to 8:30 p.m., and 9 to 10:30 p.m. These are the batches. Okay, so total 6 batches. Yes, Pallavi, that is combo. Avinash Singh, you have no money. Avinash, thank you for your message and openly saying this. So you can go through with either you can go with our recorded lecture that will cost you 20,500. Okay. Yes, EMI option you can use your credit card, and from credit card you can do this. And see, EMI we what we can do 7.5K at the time of enrollment. Okay, and 7.5K once batch start, and 15K after a month. This will cost you total 30K. So which software are we going to learn? Is it QB only or Zero, Sage and any other like NetSuite or cost and income publishing automation software like auto entry, Docs? No.
we cover QBO, and once you learn QBO, so you can easily learn Zero also because both are similar one. Okay, apart from that, we give explanation about bill.com, texture, okay, bill.com and texture and other CRM also. Then for the payroll, we give explanation about ADP or paychecks, how these systems work. Okay, so total 3 months course, 3 days accounts, 3 days taxation. Okay, yes, I think you didn't heard this, Kartikeya Sahu. What will be your performance? Okay, did you provide interview training? Yes, I think you missed that point. Let me tell you. QBA review, then a report, then exam, then certificate, then interview, then resume, then placement support. Okay, okay, so this is total process. So, any other questions from anyone, guys? And I'm adding my number here. You guys can connect with me here. Okay, you can drop me a WhatsApp message also, and or you can call me on this number also. Clear, guys? So we can end up the session. There is one person, 182.315. Who is that? Okay, Pallavi, Mr. Vijay Singh, Mr. Avinash, and Kartikeya. I hope you guys get the answer. And thank you so much for being a part of this. Mr. Akash Kaurav, Bhavesh Shankla, Daksha Soni, uh, and Pallavi, Preet Patel, Shiv Yadav. Thank you guys. Thank you. Sweta, any question? Any more question? Sushil. Thank you, Mr. Akash. Thank you. मिस्टर अविनाश, हम जो पढ़ाते हैं वो मेजॉरिटी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. ओके, तो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा. द रीजन वी आर वर्किंग. हाँ, डेफिनेटली. बीकॉम किया है कि बीकॉम कॉमर्स होल्डर हो ना, तो यू कैन डू इट. ओके, आकाश करो. थैंक यू. ओके, मतलब जिन्होंने एनरोल किया है वो भी यहाँ पे है. दैट्स गुड. फाइन. अब okay. So, any other questions from anyone, guys? Mr. Venkatesh, you are very late.
we are about to close the session. Vijay Singh Rajput, how much income can we expect? At least अगर fresher हो तो between 25 to 35K you can go. Okay? Between 35 to 25 to 35 you can easily have it, and if you have any other qualification or master degree orders, so you can, and experience, so you can claim for more. That's a good one, na? Then you know how much you can expect. You're just saying, okay, you can easily claim nearby 5 plus 2. That means that you can easily claim for 70 to 80 at least. So guys, I'm Umesh Rathod, the founder of US Accounting Coach. Okay, and I'm managing all this batch, not the batches. I'm managing all these syllabus and the trainings and the exams and everything. Okay, so I hope you have seen on Instagram the reels and YouTube channels and everything. Yes, Mr. Vijay Singh, I'm from Ahmedabad. Okay, someone is there. Yes, I'm from Ahmedabad. Okay, so yeah, guys. Uh, okay, thank you, Mr. Vijay Singh. So you can easily move to outsourcing industry, and you already into Equina. Yeah, that's true. Okay, your US paying more compared to UK. Okay, hello guys. Thank you. Have a great weekend now, and we'll meet very soon in next webinar. Okay, and any of you having queries, just drop me a message to me. I have already mentioned my number into that. As QBO provide online certificate, right? Is there any certificate you provide on the certificate provided by QBO? The first certificate which we are providing, that is internship certificate. 3 month internship certificate that we are providing. बाकी के जो 3 है वो QuickBooks कंपनी जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करती है. Okay? Done? Bye bye. Take care. Have a great weekend. We'll meet very soon. Bye bye.